Now this is a column where we have 5 different swimmers. Okay, Abhishek, Bhavnesh, Chandu, Dev, and Ehsan. These are the 5 different swimmers we have. And there are 4 different styles of swimming. There are 4 different styles of swimming. And we are given the time taken by. We are given the time taken by each swimmer in each swimming style as under. Freestyle, breaststroke, butterfly, and backstroke. यहाँ पे हमने टाइम दिया हुआ है. हाँ जी. ये एहसान जो है ना इसे बटरफ्लाई खेलता है. और बैक स्ट्रोक खेलता है. Greet all of you. सर एक डाउट है. सर जी एक डाउट है. डाउट ऐसा है सर, 2-3 जगह पे डैश दिया हुआ है. You have a dash here. You have a dash here. और एक जगह डैश देता हूं मैं. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? These swimmers don't participate in that particular swimming style. हम लोग कहता ही नहीं. It's like batsmen don't know how to bowl, bowlers don't know how to bat most of the times. Same way, भावनेश बोलता है मेरे को ब्रिज स्ट्रोक खेलने नहीं आता. ऐसा बोलता है मैं सिर्फ बटरफ्लाई बैक स्ट्रोक 2 ही गेम खेलेगा. बाकी मैं फ्री स्टाइल ब्रिज स्ट्रोक ये मैं प्ले करता ही नहीं.
आपको क्या करना है? हाउ टू सॉल्व दिस नाउ? हाउ टू सॉल्व दिस? इसको सॉल्व कैसा करेगा मैं? सर मुझे इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो आप लोग बताओ मुझे कैसे सॉल्व करो इसको। फर्स्ट इसी पे मिनिमाइजेशन कर लो और मैक्सिमाइजेशन कर लो। दैट्स माय फर्स्ट क्वेश्चन। दैट्स माय फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी सुधा जी बोलिए। इज दिस ए मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम? कोमल क्या बोलती है? मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है। क्यों? Every swimmer will like to win the race, and to win the race, he will like to cover the distance in minimum time. तो चलो एक चीज तो पक्का हो गया। प्रॉब्लम कौन से टाइप का है सर? आगे अब नेक्स्ट सवाल ये है कि सर इसको सॉल्व कैसे करें? ये तो आपके नंबर्स तो अजीबोगरीब दिख रहे हैं। So this is a minimization problem. Fine. How to solve this now? लिख दीजिए। How to solve this? बोलो पुष्कर, बोलो भाई क्या करें? कैसे सॉल्व करें इसको? बोलो। Be loud. Be loud, I say. That is fine, but numbers are also odd numbers. 112, 115 ऐसे नंबर हमने कभी किए? क्या बोलते हो? बोलना। हाँ बोलना। इसको सेकंड में कन्वर्ट करो। कैसे? कैसा बोलना? 112 को कितना लिखूं? 112 को कितना लिखूं? 112 means 1 minute 12 seconds. The problem is I want everything in minutes, or I want everything in seconds. आप partly seconds, partly minutes को देते हो। See, I can't write 1 minute 12 seconds as 1.12. गलत हो जाएगा। 1 minute 12 seconds को 1.12 नहीं लिख सकता हूँ। तुम बोलेगा तो सॉल्व करेगा तो आएगा क्या? रॉन्ग आंसर आएगा। What I will do first, of course the problem is unbalanced. First I will correct these numbers and I will put them into one single unit. So let us say I will put 112 as 72. That is 60 seconds plus 12 seconds. 115 as 75, 117 as, and 120 as, and last one is dash. So dash पे zero लिखूं क्या? अरे वाट लग जाएगा तो उसका zero लिखेगा तो असाइनमेंट हो जाएगा। क्योंकि ईश्वर वो खेल रहा ही नहीं है। एहसान, एहसान वाला जो बंदा है वो फ्रीस्टाइल खेल ही नहीं रहे। वहां पे हम क्या करेंगे ना, हम विल प्लेस एम देयर। हम क्या करेंगे वहां पे, रिप्लेस एम। we place m conventionally वहां पे m लिखना चाहिए। What is m? M is a number with a very high magnitude, with a very high value. सर मैं क्या बोलता हूँ, नहीं समझता है लास्ट तक डैश ही रखो वहां पे, कंफ्यूजन ही नहीं होगा। जीरो लेगा तो पूरे सब की बैंड बच जाएगी। आएगा सॉल्व करने पक्का? तो बैलेंस भी कर दो यहीं पे, इसी टेबल में बैलेंस भी कर दो। ओके, यहाँ पे डमी ले लो। मैं अभी ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पे डमी। और डमी का टाइम कितना लिखोगे? 0। डमी क्या लिया हमने बच्चा? डमी क्या लिया? डमी कॉलम लिया। तो आपको रो मिनिमा करने का जरूरत नहीं है। डमी कॉलम लिया तो डायरेक्टली क्या करेंगे? कॉलम मिनिमा। नो नीड टू डू द रो मिनिमा। गलती से कर दिया तो भी चलेगा, सेम ही आएगा। चलो सॉल्व करो इसको आप लोग। ऑल ऑफ यू सॉल्व इट नाउ। लेट मी नो व्हाट इज द आंसर। So one more thing, while solving such problems, wherever there is m, keep it as m only till the end. Don't add or subtract anything from that m. Anyways, we are not going to do any assignment in that particular cell, so no need to do any kind of calculations in that particular cell where we have placed m.